Hello everyone and welcome to Career Launcher. So in this session, we will be discussing about science and technology and all about artificial intelligence because I hope you are aware these days we are seeing questions from science and technology, artificial intelligence, etc. and all. So what I'll do is I will discuss with the help of previous year questions. So I will show you the previous year questions where the questions topics from science and technology were asked, and with the help of which we will keep on actually learning. So am I audible and visible? So if everything is clear, if everything is fine, please write yes in the comment section so that we can start our session. Am I audible, visible, everything is fine? So let's begin with the questions. Yes, good afternoon guys. Good afternoon everyone. So this is see what I'm doing is I will give you PYQs and you have to answer it, and then in this way we will move actually. Okay, and I will explain also like whenever key important things related with science and technology or artificial intelligence, or let's say anything like we'll be discussing cryptocurrency, blockchain, Bitcoin, etc. because these has been in the news. These have been in the news for the past few years. So discuss correct. Then nanotechnology also once asked in ARET exam. We'll be discussing these things. So with the help of PYQs, previous year question, we will discuss this entire class. Now, this is a question asked last year that in what did India become the fourth country in the world? I hope you are aware because Chandrayaan-3 mission was very much in the news. That is why they asked this question, and I think you can easily answer it. Yes, Sitamsh, you are right. The right answer is B, landing a spacecraft on the moon, and because of which India became the fourth country to do so in the on the planet Earth. This is the fourth country who has landed a spacecraft on the moon. Okay, and first to land in a first successful visit to South Pole and all. I hope you are aware. Yes, Kashish, Sitamsh, you are right. Please, the right answer to this question. Okay, the next one is what is the role of Pragyan? We have seen actually. Okay, बहुत आसान क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का. It was actually related with Chandrayaan-3 mission. There were two things. What is the role of Pragyan? First, you tell me this, then I will explain. मैंने एक सेपरेट क्लास लिया भी है important ISRO missions करके. Just search on YouTube. Important ISRO missions career launcher. Law interest. Just search this. You will get this. Okay. So basically, I hope you are aware the right answer. People are saying A. What about others? Yes, Devanshi Taneja is right. B is the right answer. To make photograph of the moon while moving. I'll explain this. But before that, first answer me this question, then I will explain. What is the name of the lander and rover? So basically, they were asking about lander and rover. It was in the news. So lander is Vikram and Pragyan is rover. So A is the right answer. ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ क्यों. ये न्यूज में था. And at that time, this is Vikram lander. And this is Pragyan rover. This was in the news last year. So basically, so the answer to this question, what is the role of Pragyan, is to move because it has wheels. Rover जो होता है इसको चक्का होता है ना, it can move. It has wheels, can move. ठीक है. So basically, to make photograph of the moon while moving. ठीक है. So this is the best one. Leaving footprints पैर नहीं होता उसका ऐसा कुछ भी leaving footprints का concept है ना. It has cameras and also it was supposed to take photograph while moving and all. ठीक है. So B is the right answer to this question. This was the perfect answer. Okay, name the institute that plays a very important role. देखो इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछते. एक बार मैंने एग्जाम में देखा था, वो पूछे थे इसरो का फुल फॉर्म लास्ट ईयर में. So this you should be knowing it. Okay, full form क्या है? What is the role of ISRO, headquarter, chairman? These things you should be knowing it because of course these are the things being readily asked. और इनका एक बहुत फेमस जो लॉन्च पैड है, the most prominent one is in Sriharikota, Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, and Andhra Pradesh. ये सब तो आसान है, इसीलिए मैं I am going fast because I know that you are knowing it. So C is the right answer here. Now, this question. The next is ये वाला question number 42 का आंसर बताइए. India became the fourth country to send its mission to moon.
तो इसका तो सिंपल है कि पीएम मोदी वाज एड्रेसिंग टू द इसरो साइंटिस्ट एंड ऑल. बट 41 का आंसर बताइए कि इंडिया became the fourth country to touch land on the surface of the moon. Which are the other three? What is the right answer? जब गौर से देखोगे यहाँ पर यूएसएसआर और रशिया को बस से रिप्लेस किया, बिकॉज जनरली पीपल बिलीव कि यूएसएसआर और रशिया सेम है, बट यूएसएसआर इज प्री 1991. ठीक है, सो द राइट आंसर इज ए एक्चुअली, बिकॉज यूएसएसआर जब था तभी उसने भेजा था सरफेस ऑफ द मून पर. So they were expecting you to know the difference, whether it is Russia or USSR, means it was done before 91 or after 91. So the right answer is US, USSR, China and India. Apparently many people would be thinking कि A और B तो same ही option लग रहा है, एक ही जैसा है. But no, actually the reality is they are different, because this is pre 1991 Russia. So the answer was A. ठीक है, ये आपको बताओ. Yes, Kashish, you are right. A is the right answer to this question. Now, अब मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से AI पर क्वेश्चन आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे. दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, एंड दिस इज CLAT 2023, जो कि एग्जाम हुआ था दिसंबर 2022 में, 2 years back. So they asked this question. I want everyone to understand that in fact a person wrote lambda. Lambda क्या है इसके बारे में, बिकॉज ये एक्चुअली लार्ज लैंग्वेज मॉडल है गूगल का ही. ठीक है, एंड इसी पर एक पैसेज आया था. ओके, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट, एक बीच में वन लिख दिया था. In the journal Mind in 1950, mathematician one proposed a test to determine whether a machine was capable of exhibiting intelligent behavior. उस बंदे का नाम क्या है? And a game of imitation of some of the human cognitive function. Cognitive मतलब क्या होता है? Thought process, understanding, knowledge, understanding, thinking. मतलब इंसान के तरह से सोच के समझ करके अंडरस्टैंड कर सकता है, इसको कहते हैं कॉग्निटिव, ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शन. तो उसने एक टेस्ट दिया था, बहुत फेमस है, एलन ट्यूरिंग टेस्ट. वेरी गुड वैष्णवी, देवांश, कशिश, यू ऑल द राइट. देवांशी, हाँ. ट्यूरिंग टेस्ट बहुत फेमस माना जाता है. इसमें उन्होंने कहा था, आई मीन ही गिव द कांसेप्ट, दिस यू मस्ट हैव हर्ड इट, ट्यूरिंग टेस्ट उसको भी कहते हैं ना. टू टेस्ट एक्चुअली कि मशीन जो इंटेलिजेंट बिहेवियर शो कर सकता है कि नहीं, मतलब वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ इशारा था उस टाइम पर. Means can machine behave like a human being and learn, जिसको हम लोग एक कॉन्सेप्ट कहते हैं मशीन लर्निंग. So machine also learn, है ना, and this is linked with artificial intelligence. So this is Alan Turing, बहुत famous थे, so you should be knowing it. A is the right answer. And इनका Turing test बहुत famous है ना, scientist and gave the concept of Turing machine, है ना, considered as father of theoretical computer science. This you should be knowing about it. Okay, yes. Now, and इनके बारे में अगर आप देखोगे इनकी विकिपीडिया पेज में मेंशन कंप्यूटर मशीन इंटेलिजेंस पर, he talked about the concept of Turing test, address the problem where he proposed an experiment that is famously called as Turing test. Okay, so this is you should be knowing about. है ना, 1950 में माइंड जर्नल था, है ना, 1950 में छपा था उसके बारे में. So you should know this. Now the next is Garry Kasparov, एक बहुत famous world chess champion है. He was defeated in 1997 by a super computer. और super computer का नाम क्या था? We had earlier also discussed. The right answer is Deep Blue. So B is the right answer. I hope you all are aware of this. ये बहुत famous हुआ था. Guys, आपको previous year question आना चाहिए. I'm very sorry if you are not answering. You should be knowing it because previous year questions, if it is repeated in any exam, होता क्या, कई बार ऐसा होता है CLAT का PYQ elect में, elect का PYQ CLAT में इधर उधर करके कॉपी करते हैं. So you should know these PYQs. At least you will get an idea. ठीक है, IBM का एक सुपर कंप्यूटर था Deep Blue, से he actually lost it. So ये बहुत फेमस हुआ था 1997 में. Okay. अच्छा, इस साल ये न्यूज था, डीप माइंड न्यूज में था. Why deep mind was in the news? Can anyone tell me? This is very, very important. Why was deep mind in the news? Something related with Nobel Prize. I think 2 or 3 of the Nobel Prize winners this year are actually linked with the Nobel Deep Mind company. This is currently controlled by Google. Okay. And actually, this is a
Sabis and jumper. Yes, Guru Ahluwalia. Very good. Fantastic. That is what I wanted to you to know. That आपको पता होना चाहिए डीप माइंड के बारे में. Currently B is the right answer. ठीक है. Because Nobel Prize this year I would say is important. एक तो AI पे दिया गया है ना. हाँ, आप Google की subsidiary है डीप माइंड. Yes, you are right. Earlier it was an independent company based in England. Right. The next is the Emperor's New Mind concerning computer minds and the laws of the physics, published in 1989. Was a British mathematician who won. It was written by a British mathematician who won Nobel Prize for Physics in 2020. अब आप देखो, ये पूछा CLAT 2023 में, जिसका एग्जाम हुआ था दिसंबर 2022 में. ठीक है, एग्जाम. ओके, एंड दे आर आस्किंग दिस. 2020 में जो हुआ था Nobel Prize Physics winner, this was asked actually in 2022, which is slightly surprising that they are asking 2 years old also. So the right answer actually is D is the right answer. Roger Penrose is the right answer to this question. अच्छा, एक और हिंट मैं दे देता हूँ. पीटर हिग्स इस साल इंपॉर्टेंट है. Why is Peter Higgs important? Can anyone tell me? Why is Peter Higgs important this year? इनका एक बहुत फेमस बोसॉन पार्टिकल है ना, हिग्स बोसॉन थ्योरी. आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड. आपने सुना होगा. Because he died recently. Died in 2024. So please read about Peter Higgs. This is very, very important. Maybe they can ask question from Peter Higgs this year. क्योंकि पहले रॉजर पेनरोज से पूछ चुके हैं, so they can ask now about Peter Higgs and all. So you should know it. ठीक है. तो Emperor's New Mind जो बुक थी जिस पर नोबेल प्राइज मिला था, it is also talking about the concept of Turing machine and all. रॉजर पेनरोज है ना, 1989 में लिखा था. So these things you should be knowing about it. है ना. Now since we are talking about Nobel Prize again and again, please go and watch it अगर आपने नहीं देखा है. So this is our YouTube channel. Subscribe to it. Go to the playlist. यहाँ पर Nobel Prize का we have made separate videos. तो सारा आप देख लेना. Watch all the videos because that would be very, very beneficial for you. ठीक है. So you should know. So देख लेना. एक और है All Nobel Prize. ये देख लेना ना. इसमें there are total 7 videos. इनको आप I would say 1.5x या 2x speed पर देख लेना. If you do not have time, ठीक है. Please do watch all the 7 videos. ठीक है. एक तो description about है, यानी introduction about Nobel Prize पर एक video, and there are other 6 Nobel Prize announcement of 2024. Please do watch it. That would be very, very beneficial. The next one is what kind of computing models resembles the way in which biological neurons exchange signal in the human brain? What is the right answer? न्यूरॉन्स किसको कहते हैं? नर्व सेल को. अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा, नर्व सेल्स आर कॉल्ड एज न्यूरॉन्स. आई एम श्योर. सो ह्यूमन नर्व सेल में यानी ह्यूमन नर्वस सिस्टम में you will find this concept. ठीक है. Yes, the right answer is neural network है ना. न्यूरॉन्स से आप ऐसे मैच भी करा सकते हो. तो एक्चुअली इसमें है क्या? फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. न्यूरल नेटवर्क जो होता है एक तरह का मशीन लर्निंग होता है. मींस इट्स अ पार्ट ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी और मशीन लर्निंग, वेयर एक्चुअली it uses artificial neuron network to teach computers how to process and make decisions in a way that mimics human brain. जैसे ह्यूमन ब्रेन में डेटा प्रोसेस होता है, इन द सेम फैशन मशीन कैन आल्सो डू इट. दैट्स द कांसेप्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क. आपने सुना होगा न्यूरॉन होता है, ये नर्व सेल होता है. जैसे ये ह्यूमन बॉडी होती है, इसमें ब्रेन होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो कहीं भी अगर मान लीजिए आपका हाथ में टच हुआ कुछ भी, जैसे गर्म चीज, कुछ हॉट वाटर, तो आपका ब्रेन में सिग्नल पहुंचता है कैसे? थ्रू द नर्वस सिस्टम, राइट? This nervous system is actually transmitted with the help of neurons. Nerve cells को कहते हैं neurons. ठीक है. This you should be knowing about. Okay. तो actually इसको neural network कहते हैं, जो machine learning, which actually is very similar to the human nervous system, or the concept is very similar to that.
और इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 2024 जो फिजिक्स प्राइज नोबेल प्राइज विनर्स हैं दे आर एक्चुअली गिवन फॉर द सेम वर्क न्यूरल नेटवर्क के लिए मिला है जॉन हॉपफिल एंड जॉफ्रे हिंटन को, ठीक है. सो दैट इज व्हाई दिस ईयर्स नोबेल प्राइज बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और मैंने आपको बताया भी है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स. जॉफ्रे हिंटन को गॉड फादर ऑफ एआई भी कहते हैं, ये भी मैंने बताया है, गॉड फादर ऑफ एआई, ठीक है. This you should be knowing it. मैंने बताया please go and watch these videos. These are very important ones. ठीक है. The next is what is the full form of lambda? Lambda passage में the first question में ये था, first passage की first line में देखो. Let me show. है ना? I want everyone to understand that I am in fact a person wrote lambda. Actually भी person है नहीं. It is an AI technology. है ना? So lambda का full form क्या है? Please tell me. These are PYQs also, so you should know it. The right answer is B, language model for dialogue application. So B is the right answer to this question. Okay. Yes, Shreya, Kashish, you are right. B is the right answer to this question. Okay. It is an example of LLM. ठीक है, lambda जो है एक example है LLM का, large language model का. जैसे और भी example इसका chat GPT आपने नाम सुना होगा. These all are examples of this. ठीक है. तो ये Google का, जैसे अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे lambda के, इसमें जाके आप टाइप करोगे कुछ तो आंसर करेगा. वेरी सिमिलर टू चैट जीपीटी, इसी टाइप की चीज है, ठीक है. अब तक गूगल का जेमिनी वगैरह भी आ गया ना, देखो लैम्डा इज लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन, ठीक है. यू शुड नो दिस. ये एक तरह का चैट बॉट है, 2022 वगैरह में डेवलप किया गया था गूगल इंजीनियर ब्लैक लेमॉइन के द्वारा. ओके, सो यू शुड नो दिस. एक और चीज आपको पता होना चाहिए, है ना, एलएलएम के बारे में मैंने बता दी. इट इज टाइप ऑफ एआई दैट कैन एनालाइज एंड अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज. इन्हें आप कुछ टाइप करोगे तो समझ लेगा. वेरी सिमिलर टू चैट जीपीटी, है ना. लार्ज लैंग्वेज एलएलएम्स आर एक्चुअली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. मैंने बताया न्यूरल नेटवर्क एक तो ह्यूमन ब्रेन का होता है, नर्वस सिस्टम, राइट, व्हिच अंडरस्टैंड योर थिंकिंग प्रोसेस, व्हिच हेल्प्स योर अंडरस्टैंडिंग, है ना. जो न्यूरॉन्स, मतलब अगर आपने कुछ गर्म छुआ ठंडा छुआ तो आपको ब्रेन में सिग्नल जाता है ना. Similar to that, artificial neural network यानी मशीन लर्निंग के द्वारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाटएवर यू आर सेइंग, ठीक है. जैसे अगर आप कुछ लिखते हो, चैट कुछ आपने टाइप किया प्रॉम्प्ट, इट विल अंडरस्टैंड इट, है ना. दैट्स कॉल्ड एज लार्ज लैंग्वेज मॉडल. तो उसका एक एग्जांपल जैसे आपने देखा लैम्डा है ऑफ गूगल, ठीक है. सिमिलरली चैट जीपीटी आपका आपने नाम सुना होगा. अच्छा, जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? दिस वाज आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जाम्स. चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? प्लीज टेल मी. What is the full form of GPT in Chat GPT? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर लॉ के एग्जाम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यों पूछेगा, बट यस, इफ यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इवन इन ALET there have been question and I'll show you. मैं दिखाऊंगा. Just wait for a few minutes, you will see. What is the full form of GPT? Generative pre-trained ट्रांसफार्मर, ये जीपीटी का फुल फॉर्म, ठीक है. सो यू शुड नो दिस. एंड इट हैज बीन डेवलप्ड बाय ओपन एआई. ये भी पूछते हैं एग्जाम में. व्हिच कंपनी इज रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग चैट जीपीटी? सो द आंसर इज ओपन एआई. हाँ, जनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर. यस, दीक्षा वाधवा, यू आर राइट. यू शुड बी नोइंग इट. इसमें बहुत पॉपुलर नेम्स है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नेम है सैम ऑल्टमैन का, जो सीईओ है. उनको निकाल भी दिया गया था. ही वाज फायर्ड, देन लेटर ऑन ही वाज रीहायर्ड एंड ऑल. और इनकी जो प्रोडक्ट्स वो इतने सारे, ये सब, ये ऑल आर एआई टूल्स. द मोस्ट प्रोमिनेंट इज चैट जीपीटी, बट अब तो बहुत सारा आ गया. जैसे सोरा आ गया वीडियो बनाने के लिए, डैल ई आ गया. यू मस्ट हैव हर्ड जीपीटी 1 2 3 4 4 ओ. ये सारी टेक्नोलॉजीज उनकी है. जैसे डैल ई है टेक्स्ट टू इमेज के लिए, फिर सोरा है वीडियो बनाने के लिए. नहीं, आप टेक्स्ट टाइप करोगे तो वीडियो बना के दे देगा आपको पूरा. So this you should be knowing about it. Okay, so you should know it. And OpenAI is headquartered in San Francisco. You should know. ChatGPT का full form बता दिए, Generative Pre-trained Transformer. Please remember it. These have been asked in different exams. और CEO का नाम आपको पता है, सैम ऑल्टमैन. इनके साथ साथ कुछ और लोग हैं जो कि इंपॉर्टेंट है. सैम ऑल्टमैन, then there is another very famous personality, Elon Musk, जो कि is founder of, like, he's the CEO of Twitter, then Boeing, and then SpaceX and many other company, है ना. So you should know about him as well.
इसलिए पता होना चाहिए. Okay, yes. Now this was a question. Meta's newly released fully trained AI language model is called as what? Meta मतलब you're talking about Facebook. तो मैंने बताया ना चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर. ये आपको बता रहा हूं कैसे कैसे याद रखना है, कैसे ऑप्शन मार्क करना है. सिमिलरली जो लास्ट में पीटी लिखा है ओपीटी, जीपीटी की जगह जैसा ओपीटी, सो ओपन प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर, इट इज एक्चुअली वेरी सिमिलर टू चैट जीपीटी टाइप थिंग. ठीक है, सो द राइट आंसर इज बी, ओपीटी. जैसे मैंने बताया जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर, सिमिलर टू दैट ओपीटी ओपन प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर ऑफ Meta or Facebook. So this you should be knowing about it. B is the right answer to this question. Okay, yes. The next is AI enabled research tool of Supreme Court of India. ये क्या होगा आंसर? Please tell me. This was also very much in the news. तो ये आपको पता होना चाहिए. What is the right answer? Yes, Samarth Singh, right? Yes, she is the right answer. सुपेस है ना, सुपेस काफी फेमस हुआ था अप्रैल 2021 है ना. SUP से याद रख लेना, सुप्रीम कोर्ट. सी इज द राइट आंसर. बहुत प्रोमिनेंट हुआ था, फेमस हुआ था एट दैट टाइम. सो सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, देन देयर इज अ क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम बजट. बजट में ये डिस्कशन हुआ था. RBI recently announced launch of digital rupee wholesale segment. A form which of the following? Digi Suvidha, virtual wallet, cyber rupee, central bank digital currency. What is the right answer? Yes, Samar Singh, Kashish, right. Because central bank, RBI is a central bank. You should know this. है ना? So इसलिए central bank digital currency. This actually was proposed even in the budget. और बजट में काफी बात किया गया था CBDC का. That is why I discuss budget also with you all. तो डिजिटल करेंसी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा. इट इज एनी करेंसी और मनी लाइक दैट इज प्राइमरली स्टोर्ड और एक्सचेंज इन डिजिटल कंप्यूटर्स लाइक इंटरनेट, क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी, CBDC. दीज ऑल आर एग्जांपल्स. ठीक है, बेस्ट एग्जांपल जो होता है क्रिप्टो करेंसी होता है. इट्स वेरी प्रोमिनेंट. आई होप एवरीवन इज अवेयर ऑफ क्रिप्टो करेंसी. ठीक है, एंड दीज आर आल्सो आस्क्ड इन द एग्जाम. जैसे ये क्वेश्चन आया था वो क्रिप्टो करेंसी पर था. व्हिच आर द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज डज क्रिप्टो करेंसी रिलाई ऑन? Cryptography, blockchain, spectrography, both A and B. What is the right answer? Yes, D is the right answer. Right. देखो एक क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन ही पे तो बेस्ड होता है. क्रिप्टोग्राफी देखो टर्म से भी आप पहचान लोगे. ठीक है, ये तो होगा, ये भी साथ में. D is the right answer. Let me explain. देखो एक्चुअली क्या होता है मैं ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा दिखाता हूँ. फर्स्ट देखो ये होता है ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन से रिलेटेड जो कीवर्ड है मैं बता दे रहा हूँ. ऐसे लिखा होगा डिसेंट्रलाइज्ड लेजर. ये वर्ड बहुत प्रोमिनेंट वर्ड है ब्लॉकचेन के लिए. लेजर का मतलब होता है जिसमें आपका सारा डेटा लिखा हो, और डिसेंट्रलाइज मतलब डेटा एक जगह नहीं लिखा है, मल्टीपल जगह लिखा हुआ है. एट मल्टीपल कंप्यूटर्स द ट्रांजैक्शन इज रिटन. तो अगर मान लो कोई फ्रॉड करके एक जगह चेंज करने की कोशिश कर रहा है, सो रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर विल कैच इट. इसीलिए इसको कहते हैं इट इज बेस्ड ऑन द कांसेप्ट टेक्नोलॉजी ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड लेजर. ये याद रखिएगा, डिसेंट्रलाइज्ड लेजर. ओके, तो इसमें खैर क्या है, तो इसमें द क्रिप्टो करेंसी अगर आप देखोगे इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉकचेन, है ना. डिजिटल लेजर या डिसेंट्रलाइज्ड लेजर, इट इज अ डिजिटल करेंसी, है ना, एंड यूजेस क्रिप्टोग्राफी कॉन्सेप्ट एंड ऑल द टेक्नोलॉजी. ठीक है, एक चीज और पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि द कॉन्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे हैं. द मोस्ट प्रोमिनेंट वन, द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी वाज बिटकॉइन. ये आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा भी इथेरियम, डॉजकॉइन, बहुत सारे हैं, लाइटकॉइन, बट दिस इज द फर्स्ट वन एंड इन टोटल 21 मिलियन इन नंबर है. ये इससे ज्यादा नहीं, इट्स अ फिक्स्ड अमाउंट. सो दिस मच इज, दिस 21 मिलियन इज ट्रेडेड अक्रॉस पीपल. ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, इसको फाउंड किसने किया था? सो नो वन नोस इट. देयर इज अ पर्सन. अब इनका नाम तो कहा जाता है कि सतोशी नाकामोटो इज द पर्सन हु
founded the concept of Bitcoin, but no one knows who is Satoshi Nakamoto. मतलब pseudonym में कोई exactly जानते नहीं कि कौन सा आदमी इंसान. But the name, the person who is given the credit is Satoshi Nakamoto. So you should know this. ठीक है? Because they are asking questions related with cryptocurrency, cryptography, artificial intelligence these days, and that is why it's important. दूसरी चीज है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन आता है कि which country has become the first country to make Bitcoin a legal tender? So the answer to this question is El Salvador. This you will find a country in North America which is in fact making a Bitcoin city also. ये अपना एक Bitcoin city बना रहे हैं. So you should know about this. So where is India? This is Mexico. This is El Salvador. And here is, you will find Bitcoin city here. वैसे El Salvador का जो capital है, that is San Salvador. This you should know. Okay, these are very important things I am discussing. ठीक है? Because ये सब question आते हैं. If you see the previous year question, you will realize it that these types of questions are asked in the exam. ठीक है? So मैंने बताया decentralized blockchain is a concept which is based on distributed ledger या decentralized ledger, and records are written on all the blocks. ठीक है? So you should know. Managed by public distributed ledger, peer to peer. ये सब keywords है जो options में generally मिलते हैं, इसीलिए मैंने आपको बता दिया. है ना? Decentralized, distributed, peer to peer, digital ledger. कैसे पहचानना है. Now, so these are famous cryptocurrencies, है ना? Bitcoin है बहुत famous, Ethereum का नाम सुना होगा आपने, ठीक है? Then Shiba Inu है, और बहुत सारे. You can see Binance Coin is there, Dogecoin is very prominent, ठीक है? Litecoin is there. So these are different names of prominent cryptocurrencies. Now let's move on to the next question. This is a very important question. What is X? Please tell me. ये भी आजकल टेक्नोलॉजी काफी न्यूज में. This technology is very much in the news. वर्चुअल रियलिटी नाम सुना आपने? Have you heard this? आपने देखा ऐसा चश्मा भी मिलता है? This type of like, देखो इसमें होता क्या है? It's a 3D near display and poses trying to give an immersive virtual world. मतलब इसमें जाओगे तो पूरा नया जब इस चश्मा लगाओगे ना ये वाला, so you will realize it's a new world. ठीक है? Completely new world. वहाँ जो भी आप जिसमें वीडियो गेम खेल सकते हो उसके अंदर ये मूवीज वगैरह देख सकते हो, कंप्लीटली वर्चुअल होता है. यानी इट हैज नथिंग टू डू विद द रियल लाइफ. ठीक है? इसलिए इसको वर्चुअल रियलिटी कहते हैं. सिमिलर टू दैट एक और कांसेप्ट होता है, उसको कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी. These all are futuristic technology, very much in the news. ठीक है? Augmented reality का मतलब क्या होता है? It is an interactive technology that combines the real world with the computer experience. तो जैसे अगर आप देख रहे हो स्क्रीन पर, उसके पीछे का जो वर्ल्ड है वो बहुत हद तक रियल होगा, उसको इम्प्रूव कर देना आता है. ठीक है? It improves the real world on the screen. ठीक है? जैसे देखोगे. But virtual reality में क्या होता है कि वो पूरा whatever is showing on your screen is completely actually completely made in a virtual world. ठीक है? आप दूसरी ही जगह चले जाओगे. So that's the difference between virtual reality and augmented reality. So please go and read something more about it, because these are the technologies which are very much in the news and can be asked in the exam. आजकल काफी न्यूज में आ रहा है virtual reality and actual reality. This is the next one, and this is also very much in the news. Please, if you know it, please answer me. किसी को पता है? Can anyone tell me? इसको कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स. इट्स अ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, आजकल काफी न्यूज में. ठीक है? encompasses electronic communication, computer sector. It has been considered best over. Ability
that connect and exchange data with other devices system over the internet or other networks. इसको कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स. ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, मतलब फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से जब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, so they can ask these technologies. अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, I'll explain. तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया रूम है, ये आपका रूम है, ठीक है, और यहाँ गेट है आपका, ठीक है, यहाँ पे सेंसर वगैरह सब लगा हुआ है, और ये आपका कंप्यूटर है, यहाँ पे आपका स्टडी टेबल है, यहाँ पर डोर, यहाँ पे मैट है, यहाँ पे कुर्सी, यहाँ पे मान लीजिए चेयर है, और ये आपका कंप्यूटर है. तो आप जैसे ही इंटर किए, द मोमेंट यू एंटर्ड द रूम, द लाइट्स गॉट स्विच्ड ऑफ स्विच्ड ऑन ऑटोमेटिकली. लाइट्स अपने आप जल गई जैसे ही आप एंटर किए, ठीक है. उसके बाद आप जैसे ही बस आप वॉइस से बोले कि स्विच ऑन द एसी, एसी गेट्स स्विच्ड ऑन. अब जाके इस चेयर पर बैठे, अपने आप कंप्यूटर ऑन हो गया. यू जस्ट वेंट एंड सैट ऑन द चेयर एंड द कंप्यूटर ऑटोमेटिकली स्विच्ड ऑन, ठीक है. फिर आप उठ करके वापस गए, यू केम आउट ऑफ द रूम, द एसी गॉट स्विच्ड ऑफ ऑटोमेटिकली, ऑल द इक्विपमेंट्स गॉट स्विच्ड ऑफ, द कंप्यूटर गॉट स्विच्ड ऑफ ऑटोमेटिकली. ये पूरी सारी चीज टेक्नोलॉजी एक दूसरे से मतलब लिंक है विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स. दिस इज द आइडिया ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है. सब कुछ कनेक्टेड रहेगा. That's the concept. I've just given an example to explain this in a simple way. ठीक है. So IoT के बारे में थोड़ा पढ़िएगा, because these days these are very much in the news. Now, अब मैं आपको बताता हूँ एक और क्वेश्चन. हाँ, the next question is about nanotechnology. This is very much in the news. इससे क्वेश्चन आया था ALET में 1 or 2 years back. तो लगता है आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखते हो, इसलिए आपको लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, you think that science and technology is not important for CLAT or ALET. Because maybe you might not have seen the PYQs, but if you see the PYQs, you will realize that they are asking questions from science and technology. तो नैनो टेक्नोलॉजी कौन से कितने स्केल पर को होता है, तो नैनो टेक्नोलॉजी वी कॉल जनरली 1 to 100. Yes, Mishika, very good. Actually 1 to 100 nanometer. This was asked in the exam. Actually एग्जाम में पूछा था. देखो नैनो टेक्नोलॉजी बेसिकली जो होता है ना, 100 नैनोमीटर से अंदर का, लेस देन 100 नैनोमीटर डायमेंशन होना चाहिए. सो जनरली 1 to 100 नैनोमीटर कहते हैं. अब नैनोमीटर 1 नैनोमीटर इज 10 to the power -9 मीटर, ठीक है. तो जैसे मैं बताता हूँ हाउ टू एक्सप्लेन. देखो 1 नैनोमीटर इज 10 to the power -9 मीटर, तो 100 नैनोमीटर जो होगा हो जाएगा 100 into 10 to the power -9 नैनोमीटर, मतलब 10 to the power -7 मीटर. ऐसे भी कहीं कहीं लिखा होगा. सो अगर देखो जनरली क्या होता है, किसी भी बॉडी का 3 डायमेंशन होता है. कोई भी एक डायमेंशन अगर 10 to the power -7 मीटर से कम है, then that technology will come under nanotechnology. If one of the dimension is less than 10 to the power -7 meter or less than 100 nanometer, that technology will come under nanotechnology. मान लो कि जैसे I'll give an example. मान लो कोई शीट है, उसका जो width है, पतलाई है, width है, that is less than 100 nanometer. So that will be considered as, इसको नैनो शीट वगैरह कहेंगे. An example of nanotechnology. Similarly, अगर मान लीजिए लेंथ और width दोनों जो है वो 100 नैनोमीटर से कम हो गया, सिर्फ लेंथ जो है ज्यादा है, लेंथ सॉरी ब्रेथ और width जो है दोनों जो है 100 नैनोमीटर से लेस है, that will be called as sort of a nano wire. अब बोलेंगे सर इसका फायदा क्या होता है? You might be thinking, what is the benefit of nanotechnology? Why we are talking about smaller scale? इससे क्या फायदा होता है? फायदा ये होता है कि when we talk about nano scale, the properties, the physical, chemical properties changes. आपको पता ही है? Do you know this? I hope you are aware, but let me explain. जैसे for example, गोल्ड जो होता है कौन कलर का होता है? गोल्ड कलर का होता है, बट नैनो पार्टिकल्स ना उसका रेड, ब्लू, ब्लैक इस तरह कलर का होता है, ठीक है. सो इंटायर प्रॉपर्टी चेंजेस एंड द चेंज इन प्रॉपर्टी आर हेल्पफुल इन मेनी फील्ड्स. तो बहुत से गोल्ड की नहीं बात करें, बहुत सारी चीज का अगर आप नैनो पार्टिकल्स का देखोगे, उसका कलर, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके फिजिकल, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सब चेंज हो जाते हैं एट दैट स्मॉल लेवल. दैट इज व्हाई नैनो टेक्नोलॉजी इज अ न्यू फील्ड. दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है. तो इसीलिए मैं आपको एग्जांपल से बताया हूं. एक चीज और समझना है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं. जैसे नैनो मेडिसिन है, इसमें क्या होता है, जैसे अगर नैनो मेडिसिन ही ले लो, ये दवा जो आपकी बॉडी के अंदर चली जाएगी, इट कैन गो इनसाइड ब्लड वेसल्स.
और जहाँ पे प्रॉब्लम होगा उसको ठीक करें, मान ली हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है कि ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाए कितना पतला होता है, एंड इट कैन डू, देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड एज नैनो रोबोट्स, जो कि फ्यूचर में मे बी इट कैन डू ऑपरेशंस आल्सो, कि आपके ब्लड वेसल्स में अंदर चला गया और रोबोट जो ठीक करके आपके ब्लड को वापस चलाए। सो इट इज सो स्मॉल दैट इट कैन गो इनसाइड द ब्लड वेसल वेरी स्मूथली। ठीक है, फिर और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी होती है, नैनो स्विमर्स एंड ऑल। फिर these are the technologies, एक होता है कैंसर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, this quite helpful in cancer treatment, इसको टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कहते हैं। मैं बताता हूँ क्या होता है, let me explain in short। जैसे मान लीजिए गॉड फॉरबिड कि कोई आदमी का ह्यूमन टिश्यू है, यहाँ पर कैंसर है, तो उसको बर्न किया जाता है केमोथेरेपी से, आई होप यू आर अवेयर। तो भी क्या होता है, कुछ कुछ सेल्स बचे रह जाते हैं, इवन इफ 1 or 2 cells is left, it can again multiply and again cause cancer even after chemotherapy। to eliminate these, कि कुछ भी नहीं बचे, नैनो टेक्नोलॉजी इज यूज्ड। ठीक है, सो दीज आर न्यू टेक्नोलॉजीज व्हिच आर बीइंग यूज्ड दीस डेज। ठीक है, तो और भी बहुत सारे फायदा है नैनो टेक्नोलॉजी का। ओके, सो लाइक इंटर प्रोसेसर चिप में, नैनो एनर्जीज में, मेडिसिन में बहुत यूज होता है, इन्वायरमेंट में। ठीक है, क्लीन करने के लिए नैनो पार्टिकल्स आर यूज्ड टू क्लीन वाटर। ठीक है, जैसे बहुत सारे मान रिवर है गंदी हो गई है, तो नैनो टेक्नोलॉजीज का यूज करके उसको साफ किया सकता है। ठीक है, और हेल्दी फूड बनाने के लिए, हेल्दी फूड के लिए, सो दीज आर द थिंग्स। द नैनो टेक्सटाइल यूज किया था, आई गिव एन एग्जांपल। जैसे बहुत सारे फैब्रिक होते हैं ना, जैसे स्पेशली आई गिव एन एग्जांपल, जैसे सॉक्स जो है ना बहुत स्मेल करता है, तो उसमें नैनो टेक्नोलॉजी डाल करके उसमें एक दो एलिमेंट आता है, उसका अगर नैनो टेक्नोलॉजी पार्टिकल डाल दिया जाएगा तो वो स्मेल नहीं करेगा। दिस इज यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, देन स्क्रैच प्रूफ आई ग्लासेस, जो शीशा बनता है चश्मा का, या उसके आगे एक लेयर बिछा दिया जाएगा नैनो टेक्नोलॉजी का, नैनो पार्टिकल्स का, विद द हेल्प ऑफ व्हिच स्क्रैच नहीं पड़ेगा आसानी से, शीशा में स्क्रैच नहीं पड़ेगा। सो दीस आर, आई एम गिविंग सम एग्जांपल्स ऑफ इट बिकॉज़ नैनो टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ गया। सो नैनो इज ऑलवेज 10 to the power -9, नैनो का मतलब होता है 10 to the power -9। और जब मैं नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, सो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट लेस देन 100 नैनोमीटर। तो उसका मतलब है नैनो मतलब 10 to the power -7 ना -9, तो लेस देन 100 का मतलब हो गया लेस देन 10 to the power -7 मीटर। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए, ये नंबर्स क्वेश्चन में आए। नैनोमीटर मतलब 10 to the power -9, 100 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर इज 10 to the power -9 मीटर, ये पूछा एग्जाम में एलेट में। एंड 100 नैनोमीटर वुड बी जो ये 100 मतलब 10 to the power 2 into 10 to the power -9 नैनोमीटर, इसका मतलब हो गया 10 to the power -7 मीटर। ये मीटर हो जाएगा माइनस, है ना, now it is 10 to the power -7 meter, so 100 nanometer is 10 to the power -7 meter, और 1 nanometer पूछा जाए, so 10 to the power -9 meter। So this was asked in the ALET exam, and that is why I was emphasizing it again and again। ठीक है, I hope it is clear। तो ये सब टेक्नोलॉजीज है, these technologies are very much in the news, and of course they can be asked in the exam। So do not think कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ी काम आएगा CLAT के एग्जाम में और लॉ ऑफ इंटरेस्ट के एग्जाम में, but no, it is not the case। They are asking it these days, and that is why you must be aware of it। So this is all about today's class. Please subscribe to the channel, press the like button, share this video। Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.